Okay, so what do I mean by motion under gravity? I mean that the particle So only under acceleration due to inflation of gravity is gravitational acting on it. force. particle moves only influence of gravity. Now, please remember that gravity is being generated by what? Mass of the earth. Gravity is being generated by the earth. So gravity is attracting everything towards the center of the earth, right? So if I drop the pen is going down because of the fact that the earth, which is a 6,400 kilometer radius ka sphere, it is attracting this pen, and the pen is going down. Pen is moving towards the center of the earth. And we also know that the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square Sir, downward. Yes. Okay, or I can write towards the center of earth. This is very important. This is very, very important. The direction of gravity. So what we will do is we will throw a particle up in the air with a velocity of u naught, and the particle will go up and then the particle will come down. After Now, attaining a maximum height, it will come down. हाँ, अब ये दोनों डॉटेड लाइंस जो है मुझे एक्चुअली एक के ऊपर एक ही बनाना चाहिए था, बिकॉज पार्टिकल एक ही लाइन पे जा रहा है और उसी लाइन पे रिटर्न हो रहा है, बट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पसेस मैंने दोनों को अलग किया. तो यहाँ पे जो ये कर्व दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है दैट द पार्टिकल इज गोइंग इन दिस कर्व, द पार्टिकल गोज अप एंड द पार्टिकल कम्स डाउन. फॉर विजुअलाइजेशन पर्पसेस आई हैव शोन that this is the part where the particle is going up and this is the part where the particle is going down. Okay, now I will divide the motion into two parts. Okay, should I divide the motion into two parts? When should I divide the motion into two parts? Should I divide the motion? मैं अपना क्वेश्चन रिफ्रेज करता हूं, ठीक है ना. मेरा क्वेश्चन ये है, इसके लिए ऊपर गया नीचे आया. Does the acceleration of the particle change? No, sir. Does the acceleration of the particle change? No, sir. चेंज हो रहा है सर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन तो सेम ही है ना. हाँ, ऊपर जाते वक्त किधर होएगा एक्सेलरेशन? डाउनवर्ड. और नीचे आते वक्त किधर होएगा? डाउनवर्ड्स. अभी तो बोला चेंज हो जाएगा. किसने बोला वो चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होएगा. वेदांत ने भी बोला चेंज होएगा कि नहीं होएगा. सब ऊपर जाते वक्त तो वो, लेकिन ग्रेविटी तो अट्रैक्ट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसके अर्थ के अपोजिट तो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का चेंज होगा साइड. नहीं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं. मैं तो अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना. मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये पार्टिकल यहां से चला और यहां पे वापस आया. इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है. क्या इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज हुआ बीच में या नहीं हुआ? बस हो गया सर. होगा या नहीं होगा? यस नहीं होगा सर. यस सर, होगा. So this is the misconception that I was talking about. Okay, please never be confused by this. The answer is no. The answer is that acceleration does not change. यस सर, सही बोल रहे थे. Acceleration does not change. Now you have a point. जब ऊपर जा रहा है, जब नीचे आ रहा है, तो ऐसा वैसा, राइट? तो I would like to remind you, अर्थ तो ये रहा,
तो जब ये ऊपर जा रहा है तो अर्थ किधर है? जब ये पेन ऊपर जा रहा है तो अर्थ किधर है? नीचे की तरफ। नीचे। वही है ना। तो जो ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्शन है वो तो ऐसे ही है। और जब ये पेन नीचे आ रहा है तो अर्थ किधर है? नीचे ही है। नीचे ही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही है, राइट? So therefore acceleration does not change. Acceleration is constant throughout this motion. इस पेन के मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब इसने मेरे हाथ को छोड़ा और वापस मेरे हाथ में आया, इसका एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज। ओके,